We know that if f and g are integrable, then fg is also integrable, and f square and g square respectively are also integrable. So taking integration from a to b, we get f square plus g square plus 2ft. Integral को separate करें, we have a to b f square plus g square plus fg. If we use Holder's inequality on this, then we get using Holder's inequality. Plus g square plus 2 f square g square, which is equal to square complete करें, we get a to b f square 1/2 plus a to b g square 1/2 इसका whole square. Now if we take under root on both sides, then we get a to b f plus g 1/2, which is less or equal to a to b f square 1/2 plus a to b g square 1/2. And this is your Minkowski's inequality. This completes the proof. This is your Minkowski inequality. It says that if f and g are two dot box integrable functions on an interval ab, then integral a to b f plus g the square whole का under root is less or equal to under root a to b f square into under root a to b g square. Now we know that f plus g whole square is equal to f square plus g square plus 2ft. Since it is given that f and g both are dot box integrable, and we have studied that if f and g are integrable, then fg is also integrable, and f square into g and g square will also be integrable. So we can take integration from a to b on both sides. So taking integration integral from a to b on both sides, we have a to b f plus g whole square is equal to a to b f square plus g square plus 2ft. This implies integral हर separate term पर ले लें. Integral a to b f square plus integral a to b g square plus integral plus 2 into integral a to b f g. Now if we use Holder's inequality on this term, then we get Holder's inequality हमने last lectures में पढ़ी थी.
उसको यूज करें तो हमारे पास आएगा इंटीग्रल a to b f plus g whole square is less or equal to इंटीग्रल a to b f square plus इंटीग्रल a to b g square plus 2 under root इंटीग्रल a to b f square into under root इंटीग्रल a to b g square. Square complete करें you get इंटीग्रल a to b f square का under root plus इंटीग्रल a to b g square का under root और इस सब का square. Now if we take under root on both sides in order to get the required result, taking under root on both sides, under root integral a to b f plus g whole square less or equal to under root integral a to b f square plus under root integral a to b g square. This completes the proof of Minkowski equality. Our next result is, let f be a continuous and non-negative function and show that integral a to b f of x dx is equal to 0 if f of x is equal to 0 for all x belongs to ab. This we have to prove. Now, हमने proof ये करना है कि if f is continuous non-negative function, then we have to show that integral a to b f of x dx is equal to 0 if f of x is equal to 0 for all x belongs to ab. Now we start this with contradiction. हम suppose करते हैं कि f of x is not equal to 0. And this implies f of x क्या होगा जी? अगर f of x is not equal to 0 है तो फिर f of x क्या होगा? पॉजिटिव सर. सिर्फ पॉजिटिव? यस सर, क्योंकि हमने कहा कि जो एफ ऑफ एफ है वो नॉन नेगेटिव है. जी बिल्कुल जो ठीक, फंक्शन है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक. This implies f of x is greater than 0. Now suppose f of x 0 for any x1 in the interval ab, there exists a delta greater than 0 such that f of x1 half lambda, say this is equal to 1. Now integral a to b f of x dx which is greater than since x1 is any point in between a and b, so if we take x1 minus lambda where lambda is a positive constant, then we get a, and adding a delta in x1 we get the b point. So this implies half lambda x1 plus delta dx. That is equal to half lambda
plus delta minus delta. So that will be equal to half lambda so this is equal to x1 goes with this x1, we get half lambda 2 delta, 2 goes with this 2, we get lambda delta. Since we know that lambda is greater than 0, delta is also greater than 0, so this is greater than 0. So this implies that half a to b integral a to b f of x dx is greater than 0. So this is a contradiction. हमको तो ये शो करना था कि इंटीग्रल a to b f of x dx is equal to 0 होना चाहिए. So this shows that our supposition was wrong. So this implies that integral a to b is equal to 0 if integral a to b f of x dx is equal to 0 if f of x is equal to 0. So this was the statement. That let f be a continuous and non-negative function, then we have to show that if f of x is equal to 0, then integral a to b f of x dx is equal to 0. We have started the proof of this theorem by contradiction and supposed with this position. एक्सक्यूज मी सर. जी सर स्टेटमेंट में थोड़ा क्वेश्चन है मेरा. जी सर ये इसमें हमें क्या गिवन है? ये इंटीग्रल a to b f of x d of x is equal to 0 गिवन है. हमने f of x is equal to 0 नहीं प्रूव करना है. हमें ये if के साथ जो चीज दी होती है ये गिवन है और हमने ये शो करना है. गिवन हमें f of x is equal to 0 है और शो हमने ये करना है इंटीग्रल a to b f of x dx is equal to 0. तो जब हम सर ये f of x नॉट इक्वल टू 0 रख के चले हैं, मतलब हमने रॉन्ग, मतलब कंट्रेरी वो लिया, लेट किया है, तो फिर तो रिजल्ट रॉन्ग ही आना था. फिर कैसे कंट्राडिक्शन हुई? वहाँ कंट्राडिक्शन की समझ नहीं आई लास्ट में जो आपने कहा कि ये ग्रेटर देन 0 आ गया. अच्छा अभी इसका प्रूफ देखते हैं, उसमें आपको बता देते हैं. ओके सर. देखें, वी हैव टू शो दैट f of x is equal to 0 है तो ये equal to 0 होगा. हमने कंट्राडिक्शन से इस तरह स्टार्ट किया कि ये नॉट इक्वल टू, सपोज करते हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये 0 आएगा. हमने ये शो करना है कि इंटीग्रल a to b f of x dx is equal to 0 तब ही होगा जब f of x is equal to 0 होगा. हम भी सपोज अब कर लेते हैं कि f of x is not equal to 0, तब हम चेक करते हैं कि तब भी ये इक्वल टू 0 आता है कि नहीं. हमने ये इसलिए ये कंट्राडिक्शन स्टार्ट ली कि f of x is not equal to 0 since it is given that f is non-negative. So एक ही केस हमारे पास बचेगा, that is f of x is greater than 0. Now suppose that f of x is greater than lambda, which is greater than 0. So for x1 any point in the interval ab, there exists a positive delta such that f of x1 is greater than half delta. इसको हम 1 कह देते हैं. Now integral a to b f of x dx is equal to integral x1 minus delta to x1 plus delta f of x dx, which is greater than integral x1 minus delta to x1 plus delta half lambda. Since x1 is any point in this interval, so subtracting any positive delta we get a, adding any delta to x1 we get b. So this implies integral a to b f of x dx is greater than half lambda integral x1 minus delta to x1 plus delta dx.
विच इज इक्वल टू हाफ लैम्डा। यहाँ पर हम इंटीग्रल को सॉल्व करें, पहले इसको पुट करें तो वी गेट लैम्डा डेल्टा विच इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास जो इंटीग्रल आ गया दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि ये इंटीग्रल तब ही 0 होगा जब f of x इज इक्वल टू 0 होगा। अगर f of x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये हमारे पास इंटीग्रल 0 नहीं होगा, दैट विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0। This completes the proof of this theorem. Now our next theorem is generalized mean value theorem. It states that f is a continuous function on the interval ab, and if g is greater than 0 is integrable on the interval ab, then there exists a number c in the open interval ab such that integral a to b fg is equal to f of c integral a to b g. इसका proof होगा। Now, since it is given that f is continuous, therefore its supremum and infimum will exist. Is this true? The function is continuous. Function is continuous. Therefore, its supremum and infimum will exist. Is this true? क्या ये सही होगा कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उसका सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो एग्जिस्ट करेगा? जी बोले। सर अगर वो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होगा तो फिर ये आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अगर वो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होगा तो एग्जिस्ट करेंगे। थोड़ा ऊंचा बोले। सर अगर वो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होगा तो एग्जिस्ट करेंगे। ये आपकी आवाज नहीं आ रही। सर वो कह रही है कि फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा तो उसके जो सुप्रीमम और इन्फीमम है वो एग्जिस्ट करेंगे। मैंने तो ये सवाल पूछा है, यूनिफॉर्मली का नाम ही नहीं लिया कि कंटिन्यूअस है तो उसके सुप्रीम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं? यस और नो? यस सर। जी वो कैसे? सर मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम होगा तो हम देखेंगे ना कि उनके दरमियान में फंक्शन कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर हमें सुप्रीमम और इन्फीमम का नहीं पता होगा, क्या पता नेक्स्ट तो आगे जाके फंक्शन कहीं ब्रेक करता हो, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन ये कंटिन्यूअस है? देखो ऐसा रिजल्ट है को आपको याद हो, ऐसा रिजल्ट जिससे हमें ये पता चलता हो अगर कंटिन्यूअस है उसके सुप्रीमम इन्फीमम जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। Every continuous function is bounded. जी Every continuous function is bounded. जी बस गुड। Continuity of a function on an interval implies that it is bounded on the interval. So bounded है तो इसका मतलब है उसके सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करते हैं। Suppose that m is equal to supremum of f on this thing, and small m is the infimum of f
on this. We know that is bounded, so it lies between its infimum and supremum. I multiply on each side of this double inequality with g of x to get which is less or equal to this implies, since it is given that f is continuous and continuity implies integrability, and it is also given in the statement of theorem that g is also integrable, so taking integral on each side. From this we have m को बाहर निकालें, स्मॉल m को, g of x. This implies m is less or equal to which is less or equal to capital. Let's say this central term is equal to lambda, then this implies m is where lambda is equal to zero. Now we know that for we have f of c is equal to lambda. ये कैसे आया? ये मैंने कैसे लिखा? For c, any c in the A, B, we have f of c is equal to lambda. G. Anyone? जी कोई बताए जी. जी एनीवन? मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल किया. जी मीन वैल्यू थ्योरम. मीन वैल्यू थ्योरम वो कहां से आ गया?
जी रियल एनालिसिस 1 में पढ़ा होगा हमने। To see the open interval AB, we have f of c is equal to lambda। आप लोगों ने कैलकुलस 1 में भी इस चीज को पढ़ा होगा और रियल एनालिसिस 1 में भी पढ़ा होगा। Okay, this is your intermediate value theorem। अपने रियल 1 के या कैलकुलस के नोट्स खोल के आप देखिएगा। For C, any point in between AB, we have f of C is equal to lambda। So this implies lambda, which was equal to f of x, g of x, x, which is equal to f of C। This implies f of C is equal to integral a to b f of x g of x divided by integral a to b g। So this implies integral a to b f of x g of x is equal to f of c integral a to b g of x। So this completes the proof of generalized mean value theorem। इसके थ्योरम को दोबारा हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।